Education gives the power to stand up for the rights, to be heard, and not become part of a herd. Education has the power to transform individuals, families, and societies. 45% of Pakistan's population is illiterate, but many of those also realize the power of education. They strive hard for getting their children educated. Despite the acute pain in his polio-affected leg, Haider walks for miles to earn ₹50 per day for feeding other people's cattle. He takes the pain in hope of giving his children a better future. मेरे को जानो को बच्चे को तकलीफ नहीं आती होती है ना, मैं झूठ पिटता हूँ, लटते हलता हूँ बहन, मजदूरी करना माने तो बाल डाल जो है ना, ये मान ला पड़े ना मान लगते, तकलीफियाँ बाल मुझे तो कटे है, मैं बच्चों को नहीं कटूंगा. Halima is another example. She has worked the land as a tenant all her life, but has sent her 3 daughters to school. One of them is a teacher now. Parental expectations often clash with on-the-ground reality. What happens in schools often becomes the very reason for decreased participation and lack of interest. Thank you. Now. Children. Let's go home. Mother. What? The rate of tomatoes and cauliflower. एक आसामी जो है वो 2006 से खाली है, अभी तक उसकी जगह कोई भी नहीं आई. निसाब किस तरह कमली नहीं, इतना तो तसली बख्श तो नहीं होते. 6 बुक्स है 3 क्लास तक, और इसके नीचे जो है उसके 4-4, 5-5 बुक्स है. तो मैं अगर ज़्यादा भी कोशिश करूँ तो 3-3 पीरियड ले सकती हूँ 6 क्लास के साथ, वो भी मैं ज़्यादा करती हूँ, और तसली बख्श तो नहीं होती पढ़ाई. किसी को रिटर्न का काम देती हूँ, किसी को पढ़ाती हूँ. फिर ये बड़े क्लासों में जो बच्चे लायक होते हैं वो अपने काम जल्दी कर लेते हैं, तो फिर इनको छोटी क्लासों पे खड़ी करती हूँ कि इसका ख्याल रखें. बच्चों के साथ जाती है ना, मेरी तो सैलरी है वो तो मुझे मिलती है, लेकिन बच्चों के साथ जाती होती है, उसका टाइम ज़ाया होगा. Interest in learning disappears, dreams get crushed, hopes turn into despair, and the only thing that rises is the number of school dropouts. Kashif is only 12 and prefers working in a barber shop than going to school. Earning ₹100 a day, he puts the bread on table for his mother and 3 siblings. स्कूल में ठीक है, मास्टर बहादुरी पर ना करते पहले जाएगा, पैसे में बालिया कुटा बीच में क्या पाना शौक ही करना है. Parents realize the need but don't feel convinced that the school would do any good. They don't have a way to find out what their children are learning. वो पढ़ेल सही है या अनपढ़ेल वाला सही है? पढ़ेड़ा ने चाह रखी है, अनपढ़ेड़ा बस ये मैं छोड़ में स्कूल में मास्टर पढ़ेड़ा को मैं जब तो आ रही है ना, मैं तो 7 किताब पढ़े हो. हाँ वो क्या करते हैं अब? वो हेड़ा हाले भीतर के लिए पत्नी धंधे का करें. The annual Status of Education Report, popularly known as ASER, is an initiative focused on finding out how well children are learning in school and whether provision for them meets basic standards of education. For the last 3 years, ASER Pakistan is generating specific yet simple information on learning levels of children of age 5 to 16 years to inform policy and action. The annual Status of Education report in Pakistan has become quite a milestone for the citizens of this country as well as the governments. And the reason being that this is the first time ever that we have data emerging regularly year after year to inform the policy as well as the action debates in Pakistan. After the 18th Amendment
the provinces take the lead on how they want their context and the priorities to be highlighted through such evidence-based planning. The ASER provides precisely that armory for the provinces to be able to take the actions forward on gaps in education and challenges which are there for access, for quality and equity. Trained and supervised by a robust ASER team, ASER volunteers conduct household survey, learning assessments and school observations. This year, over 9,000 enthusiastic and diligent volunteers led the survey in 136 rural districts and 6 urban towns across Pakistan. हमारे रज़ाकार मुख्तलिफ अज़ला में, मुख्तलिफ एजेंसीज एफआर में, मुख्तलिफ गाँव इलाकों में गए, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश आया या हमारे रज़ाकार वॉलंटियर्स को जो पेश आया वो ये था कि उनकी एक्सेस का मसला था। हालात जो केपी में चल रहे हैं, स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, बच्चों और बच्चियों के स्कूलों को तबाह किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में हमारे वॉलंटियर ने बड़ी हिम्मत करके ऐसे इलाकों पे पहुंचे जहां पे पहले कभी कोई शायद ही गया हो। वहां पे उन रज़ाकारों ने घरों में जाके बच्चों का सर्वे किया, बच्चों की मयारी तालीम को जांचा। Communities are not just contacted for collecting information. ASER ambassadors and teams share the findings with them in public meetings, also called ASER baithaks. That's where strength and beauty of ASER lies. मुल्क को आगे लेकर जाना है तो हमें इल्म को पहली तरजीह बनाना होगा, और सिर्फ तरजीह नहीं बनाना होगा, इल्म के लिए अपने अमल को भी पहले नंबर पर लाना होगा। पूरे पाकिस्तान में इसमें शहरी शामिल हुए हैं, वॉलंटियर शामिल हुए हैं, और वो चाहते हैं कि ये तब्दीली का सफर शुरू हो। तालीम के हवाले से जरूरत है। Emerging from a large set of data collected on over 250,000 children, ASER findings have the power to end the inaction of all stakeholders and inertia of the education system. ASER, which is a participatory citizen-led survey, is now in its 3rd year, and the good news is that it's covering all of Pakistan and almost all the districts of Pakistan. I remember we started 3 years ago and NCHT was a part of the initial ASER team, and at that time we're covering only 1/3 of the districts, and now it's all over. The findings, of course, are concerning, but it's important to put these findings before the policymakers and before the parents and all stakeholders, and to alert them into action. ASER breaks myths and corrects perceptions. पहले ये कंसर्न था एक आम वालिदैन का कि बच्चा स्कूल जाए, और स्कूल अच्छा प्राइवेट स्कूल हो तो बहुत ही बेहतर बात है, लेकिन जब ये टेस्ट लिया जाता है तो वो देखता है कि ये स्कूल तो जा रहा है, इंग्लिश स्कूल में भी जा रहा है, और मुझे रोज नया लफ्ज भी बता रहा है आके इंग्लिश का, तो मैं तो उसी पे खुश था, लेकिन जब इससे हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा उसे, तो वो उस तरफ थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि सिर्फ स्कूल भेजना, उसकी फीस देना काफी नहीं है, साथ हमें ये भी देखना कि बच्चा सीख क्या रहा है वहां से। ASER sheds lights on forgotten issues and urgent gaps. Another critical area is that things that may be forgotten often in these high-level statistics about issues of security and girls' education. क्योंकि एक बच्ची अनपढ़ रह जाए, पूरा घर अनपढ़ रह जाता है। एक बंदा अगर बच्चा अनपढ़ हो ना तो एक कला फर्द अनपढ़ होता है, लेकिन बच्ची जिहड़ी है उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। As Pakistan is currently reeling from the challenges of displacements, migrations due to conflict and other natural disasters. One serious challenge is the law and order situation, and the government of course is severely challenged in many parts of Pakistan, especially I would especially mention here FATA and the border areas of Balochistan and Afghanistan. And I would also particularly mention Sindh, which has seen successively floods, and that obviously has led to large-scale displacements of people, and all that does affect education. ASER is a call for action, to stand up to make a difference.
They say openly that this is an issue which they have not been able to solve, but the solution that they provide clearly falls far below what is required. So what the media can do is A, inform the people about the sad state of affairs, and B, perhaps more importantly, put pressure on policymakers to get their act together. In a very humble and modest ways, something that started in India in 2005 is now scaling up, not just in terms of South Asia, but Africa and I believe soon in Latin America. It is time to come together to save future of millions of children and create destinies through the power of education. इल्म से आगाही होती है, इल्म तो तीसरी आंख है। इससे हम न सिर्फ खुद को पहचानेंगे पर अपने रब को भी पहचानेंगे और उसका इंसान को भेजने का असल मकसद यही है कि उसको पहचाने। है जवान इन आँखों में ख्वाब सारे के राहों में है फिर वो जलता दिया ये चेहरे हैं प्यारे तो क्यों दर बदर से हैं कोई तो दिखा दे